Assalamu alaikum everyone. I hope I'm audible. Walaikum Salam. I'm loud and clear. Ji, so welcome everyone to today's skill exchange program session that we've organized specially for new tutors. So I just dropped a brief note in the public chat that you can drop a brief introductory line about yourself. You can tell us what do you teach, how much teaching experience do you have, maybe how long have you been working with the platform. I think with this, I can start. We have a number of participants already working with us. If you have a question, please go ahead, unmute yourself and ask. Could you make me the presenter, please, Bilal? Maybe I can just do that. Take presenter. So basically, the purpose of the Skill Exchange program is that we are developing a community of lifelong learners. So these are teachers who are happy to learn and improve. I guess my internet is weak. Maybe there. They can hear and listen to you clearly. Since Hamid and Nimra are writing, please, Nimra, can you tell if you can hear properly? Okay, welcome Haris and Mr. Hamid. All right. So essentially, I think all of these are folks who are hopefully lifelong learners committed to excellence and knowledge sharing. So let's start today's session. Basically, TutorBees was initiated in 2017 in pre-COVID times. And previously, we used to do quarterly updates to the features, and we used to regularly take input from all the users, be they parents, be they students, or tutors. So essentially, what you are experiencing on the platform now is a product that has been built based on the community feedback. At this stage, we would like to go ahead with quarterly update of policies. Depending on what we are hearing and seeing in the market, what our users are telling us. Our social media links are given on the screen. You can see it. We're present on Facebook, LinkedIn, YouTube, and of course, Instagram. A brief snapshot of our pages is shown here. So in case you haven't followed our links, please do that. We post regularly about new features that are coming up, new programs that are being launched, and other educational content as well, content that's helpful for tutors also. So talking about the new tutor onboarding process. So essentially, whenever somebody wants to work on the platform, it is very important for us to understand what their profile is. It means where have they taught, for how long have they been teaching, and for that purpose, again, the next step is the onboarding course. So first step is that people normally put up their profile picture, their profile description, the subject that they teach, the minimum and the maximum rate that they want to charge. And after completing their profile fields, they have to move on to the onboarding course. So this step. Let me just take a text tool. So this is the onboarding course that a lot of you kind of initiate, and sometimes people don't complete the course. It's a very short course. If you, all right, Mr. Hamid. So if you take the course and you start it you can complete it in one go in about an hour. So all the course has is our policies. How does the platform work? What are the steps that you need to do in order to secure a tuition? And of course, after the course, there is a very short assessment that is taken. This assessment is also online. You're shown a number of questions on the screen, and you have to pick up the right choices. In case there is an incorrect response, the system will allow you to go back to the onboarding course, refer to the content again, and then attempt the assessment. So there's no issue if you kind of develop your understanding after 2 or 3 attempts. That's fine with us. Now coming over to the practice class. The concept of a practice class is that really, you see, every single month we have more than
800, 900 tutors who initiate their registration process. That's a very big number for us to actually manage and see that, who out of these 800 or 900 is a capable teacher to work on the platform. That is why we introduced the concept of a practice class. So the practice class concept says that you have to use the virtual classroom. This is the very virtual classroom that is available for all of you. That's how you will be working also, right? So right now I'm using this whiteboard. It's shared with you. I can write on it and you can also write on it. If you try, let me share the whiteboard with you. If I do that, all of you will be able to write on this same whiteboard. So essentially what we ask the teachers to do and demonstrate is that once they create the practice class, they started, they will see the timer running on the top. This is being auto recorded and today's session is also auto recorded. We are fine with that. Within the class, you have to use this whiteboard because I uploaded this one presentation that I am using. You will upload your content and then you will be able to, you have to actually move back and forth between your slides the way I'm moving my slides, right? You can write on it. You can ask the student to write on it also. Then there's this camera option. So for example, if I have to switch it on, let me do that briefly. You're required to do this in your practice class also, that you have to switch on the camera briefly so that we want to see a real human being there. And some of the parents also actually like to meet teachers before they allow their children to study with that teacher. So it's very important that you're comfortable with this environment. And now I can switch it off. So what I used in the camera was the virtual background. It's up to you if you would like to use a virtual background. Then you have to do a screen share also. Let me actually demonstrate that as well. So the way I am demonstrating all of these, you're supposed to do the same in your own practice class. Just give me a second. I'll share my screen. I hope you can see my screen now. Yes, ma'am. Yes, ma'am. All right. So basically, I shared my screen and on purpose, I just picked up the onboarding course so that I can show it to you while we are discussing the same. And then I zoomed it a little bit so that the view is easy for you to see. And the difference that you can see is that now I cannot use my pen here on the whiteboard because my screen is shared. I have to go into that other window and I have to then scroll from here. All right. And at this point in time, I don't get to see the chat. So this is the onboarding course that we were referring to. The link to this course is available on your dashboard. Any questions so far? So essentially what this is doing is there are different sections here. In each section, you will see the content as well as an instructional video that tells you, how do you do this step. A lot of effort has gone into creating this content because we have to repeat this for all the new teachers who want to work with the platform. All right. So this is screen sharing. So the first step is actually all the mechanics, the technology part of things where you have to demonstrate that, you're comfortable using this technology. Otherwise, what happens is that, if you're teaching biology or mathematics, the subject goes in the background and the teachers are then struggling, they don't understand how do I share my screen, how do I get the student to work on the problem that is on the screen and so on. So the purpose of these practice classes is that you can create multiple ones. You can keep them really long. Each class can be long, it can be more than an hour also. And you can learn how to use these tools, right? The interface is very, very similar to what you would see in Zoom and Google Meet, etc., right? All right. So moving on to the next point, which is very, very important, that is the next segment of the practice class. You see, within that same class, once you've done with experimenting, you can just say that now I'm going to introduce myself and I will also teach a topic. So the whole idea over here is that, we try to extract one video
snippet from your introduction and we attach it with your profile after we take your permission. So that allows parents to actually see you speak before they can even get into a demo class with you. It increases your chances of getting a paid tuition very soon. So when you introduce yourselves, it's a good idea if you can turn on your camera and say a few sentences about who you are, what you teach, what is the experience that you have, how students enjoy learning from you. So that's your introduction part. The next thing is that to demonstrate your own teaching style, you can pick up any topic of your choice. जी उर्दू बिल्कुल बोली जा सकती है, आप बिल्कुल सवाल पूछ सकते हैं. I am specifically opting for English because a lot of our teachers, they are required to speak English when they are teaching students who are from other countries. So to demonstrate your teaching style, आपको करना ये होता है कि if you're teaching maths, pick up any topic of your choice and explain that topic for some time. Maybe 2 minutes, maybe 3 minutes, whatever works for you. The benefit of doing that is that our team is able to assess whether you know how to communicate a concept, whether you can explain it effectively or not. Okay? And that's very important because if you have stated 3 different subjects on your profile, you have to demonstrate that your teaching style for all 3 of them. If you've added physics, mathematics, and maybe a third subject also, you will do a demonstration for physics, you will do another demo for maths, and a third one as well. And you can do all 3 in the same single practice class, right? Because जैसे अभी है, we are talking about different things. The session will continue to run. The auto recording is switched on. You can continue to do all of this in one go. Okay. So this was about the second point to practice class में cover होता है. The third point is, there are other things such as bill issuance and, how do you share your profile. All of that is covered in the onboarding course. This is not part of the practice class, but this is part of the interview process that we have at the end. Do you have a question? Somebody's mic is switched on. Can I speak Urdu in class, but sometimes students speak Urdu? Yes, it's up to you. Sometimes this is something that you would want to discuss with the student upfront. What language are they comfortable with? Or normally demo class में ये decide हो जाता है. If the student is speaking Urdu, you reciprocate, you also speak Urdu. If the student is speaking in English, then you also speak in English and explain in English. अच्छा, so practice class जो है उसको अगर मैं आपको zoom करके दिखाऊं, so this is the email which goes out to every teacher जो कि practice class create करते हैं, right? And you can see the same headings, the ones that I explained, that it's listed here that the teacher should do their screen share, they should upload their presentation, they should demonstrate how to turn their mic on and off, they should demonstrate how will they use the whiteboard, and they should actually do their own introduction. And while doing that, it's extremely important that they should be dressed up professionally, and they should, if needed, they should use a virtual background. So if you have a very Ji, please go ahead and ask question. Muhammad S. If you have to ask a question, you can go ahead, unmute yourself and ask. And here is the guideline to doing your own demonstration. You greet with a smile. You should introduce yourself. ये steps यहाँ लिखे हैं जो मैं पढ़ रही हूँ, right? You should introduce yourself and explain what you can teach. और end के ऊपर आप एक goodbye या thank you कह सकते हैं, right? And you should use correct grammar, etc. So this is the guideline which is sent to every tutor when they are at the stage of practice class recording. So take notes, follow the guidelines that are given here so that your first practice class is approved. Otherwise, what happens is you get a feedback email from the admin, and after that feedback email, you make a second attempt, then again some of the points are missing. So try to get things right in the first go. It's not that difficult. Any questions so far?
अगर Uh, आपके सवाल हैं, आप जैसे भी ma'am, पूछ सकते हैं उसके बिना। yeah, yeah. Ma'am, I just wanted to clarify to Mohammed and everybody, if they want to talk, the mute button, you can see the mic button is under the whiteboard. You can unmute yourself and you can speak up. Thank you, ma'am. ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। जी, तो आगे चले। अच्छा जी, सो हियर्स अ क्वेश्चन फॉर एवरीवन। व्हाई डू यू थिंक कि प्रैक्टिस क्लासेस 3 होती हैं, वहाँ पे डैशबोर्ड पे 3 नज़र आ रही होती हैं? व्हाई डू यू थिंक दैट्स द केस? जी, जी, प्लीज़ गो अहेड। मोहम्मद एस के नाम से जो हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। अच्छा ये जी, जी, बताइए वालेकुम सलाम। कि ये जो टीचिंग वाइट बोर्ड और सारी चीजें ये हमें प्रोवाइड की जाएंगी? जी, बिल्कुल आपके अकाउंट में ये सारी ऑप्शंस अभी भी एग्ज़िस्ट करती हैं। अच्छा, उसके लिए ये आप बता रहे थे कि इसकी रजिस्ट्रेशन फीस है वो 5,000 पर एनम है, तो वो पहले हमें एडमिट करानी पड़ेगी या बाद है आफ्टर? वो बात की है जी। वो 5,000 सिर्फ उन लोगों को पे करना होता है जो कि बिल्कुल लास्ट स्टेप तक इंटरव्यू भी पास कर लेते हैं और उन्हें ये नज़र आ जाता है कि फॉर एग्जांपल इफ समवन इज टीचिंग, लेट्स से साइकोलॉजी को पढ़ाते हैं, व्हेन दे एक्चुअली सी के साइकोलॉजी की रिक्वेस्ट भी प्लेटफॉर्म पर आ रही हैं और मैं ऑफर भेजना चाहता हूँ, एट दैट स्टेज दे हैव टू डिपॉजिट दैट 5,000। उससे पहले ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये एक आखिरी सवाल, ये जो है ना जो सेशन हो रहा है, क्या इसकी रिकॉर्डेड वीडियो या ऑडियो मिल सकती है? जी, एब्सोल्युटली। हमारी जो यूट्यूब है, एक्चुअली बिलाल, इफ यू कैन टेक द प्रेजेंटर एंड is it possible for you to share our YouTube channel? Or maybe I can Yes, load ma'am. it from there. Let me Yes, ma'am. actually Yes. share it also. Ma'am, should I मुझे also share the link in the public chat? जी, वो लिंक भी है। वी कैन डेमोन्स्ट्रेट कि बहुत सारी वीडियोज़ ना यहाँ पे ऑलरेडी आपके लिए अवेलेबल हैं। आप वो भी यूज़ कर सकते हैं और इस सेशन की भी इंशाल्लाह वी विल एडिट इट एंड पुट इट देयर। Just give me a second. Let me see if I can just share it and show it to you. So can you see my screen now? Yes, ma'am. Yes, Oh, ma'am. We can see it. जी, जी, Yes. जी। ओके, थैंक यू। सो एसेंशियली जी, ये tutorbees.net के नाम से जो हमारा चैनल है, आपने स्पेलिंग्स चेक करके इसी को फॉलो करना है। वी हैव द सेम लोगो एंड द थीम जो हमारे वेबसाइट के ऊपर है, बिकॉज़ इससे कुछ मिलती-जुलती थीम्स भी आपको शायद नज़र आ जाएँ। अच्छा, यहाँ पे अगर आप नीचे इस सेक्शन में आते हैं, तो हाउ टू यूज़ द प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ ट्यूटर की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, राइट? तो इसमें आपको काफ़ी गाइडेंस इसमें मिल जाएगी और जो हमारा स्किल एक्सचेंज प्रोग्राम है, उसकी वीडियोज़ यहाँ पे नीचे एक सेपरेट सेक्शन में हैं। दिस इज़ द वन, राइट? तो ये वाली हमारी करंट सेशन जो है, उसकी वीडियो इधर अपलोड हो जाएगी। एंड समटाइम्स व्हेन वी से कि हम आपसे परमिशन लेके आपका प्रोफाइल अपडेट करेंगे, तो वो नॉर्मली हम परमिशन लेके वो यहाँ पे इधर भी डाल रहे होते हैं और इससे भी लोगों को लीड्स मिलती हैं। समटाइम्स पेरेंट्स यहीं से देख के जो है वो कांटेक्ट कर रहे होते हैं कि अच्छा, वी वांट अ डेमो विद दिस टीचर और दैट टीचर। एनी अदर क्वेश्चंस? सो किसी और का कोई गेस कि हमारे पास 3 प्रैक्टिस क्लासेस क्यों नज़र आ रही हैं वहाँ पे? कैन एनीवन एल्स गेस? Hello, can you hear me? यस, आई कैन हियर यू। Okay, I think the reason why we have three practice classes, first of all, the reason is you need to know that whether we you can use the tools like whiteboard and other like mic on or mic off. And the second practice class is just to introduce, like the teacher can introduce himself or not, like to know about the teacher. And the third one is that to get the knowledge, to get know that how much the teacher can know about the subject, the relevant subject that he want to teach. थैंक यू वेरी मच जी। लॉजिकली तो यही 3 बातें हैं जो आपने एक्सप्लेन की हैं। और एक मैं इसमें ऐड ये करना चाहती हूँ कि दीज़ आर एक्चुअली योर 3 चांसेस टू गेट इट राइट।
तो अगर आप इसको हमारे प्लेटफॉर्म के पर्सपेक्टिव से समझें तो आवर चैलेंज इज कि वी हैव हंड्रेड्स ऑफ टीचर्स showing up every month that we want to work with the platform. ठीक है, तो हम ये चाहते हैं कि पर टीचर हमारी लिमिटेड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हो. सो दीज आर एक्चुअली 3 अटेम्प्ट्स. इफ यू गेट एवरीथिंग राइट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, then we are good. You can move on to the next step. ये बात थोड़ी सी क्लियर हुई? Can someone else comment or confirm कि उनकी क्या understanding है? Why do we have 3 practice classes over there? It basically gives us a tutor 3 chances to get uh, fully hired on the platform, because as mentioned before, that this platform has a few requirements which a tutor has to fulfill in a practice class. So once, if for the first time you are not fulfilling any of those points which I mentioned before, then maybe the class might not be approved by the admin team, and then we can like apply for only 3 times, and after that we are not eligible to apply anymore. That's why. जी, जी, बिल्कुल ऐसे ही है कि we would ideally like कि आपकी सारी चीज़ें one single class में ही cover हो जाएँ. Your introduction, your demonstration of the tools, and your demonstration of the teaching style also. तो अगर वो नहीं होता तो then our team is giving out feedback. आप उस feedback को carefully review करें. वो जो checklist मैंने दिखाई थी वो आपके पास email पर आई हुई होती है, आप उसको review करें. और करने के बाद then utilize your second attempt के उसमें आप सारी चीज़ें demonstrate कर सकें. तो if that happens तो फिर आप second attempt के अंदर जो है इंशाल्लाह you will get through. और अगर किसी का कोई पॉइंट फिर भी रह जाता है तो then there is a third attempt as well that you can use. So what basically happens if somebody has availed all the 3 practice classes and still they are not eligible to tutor on the platform, then what happens? Is there a break that happens in the, or is there a time duration that after that they again has to undergo with this series of steps, or like they are fully ineligible to be there on the platform? अच्छा, so अभी तक के प्रोसेस के मुताबिक जी they are not eligible to work with the platform. And why have we kept it that? Initially, number of practice classes ज़्यादा allowed होती थी. Over time, what we observed was that people who do not read their emails carefully, people who do not take the time to prepare कि अच्छा मेरी practice class है, किसी ने review करनी है तो मैं I should make my best attempt कि मैं सारे points cover कर लूँ. These are the teachers अगर ये let's say 5-6 attempts के बाद आगे proceed कर भी जाते हैं, तो इनका जो attitude होता है ना कि attention नहीं है या preparation नहीं की हुई है, that also shows up in their teaching style. So that is why we have limited it to 3 practice classes. Okay, when detailed emails and instructions are going out from the platform, we do expect people to responsibly attempt these classes. तो अगर कोई 3 एंड केस बाय केस भी फ़र्क होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी की बहुत कोई छोटी चीज़ है जिसकी वजह से रेपिटिशन आई है, sometimes we do allow a 4th attempt also. But it depends on a case by case basis. For most of the people, they do not get a 4th attempt. So basically, like in my case, I've been like using TutorBee for some time. Then there was a gap. I was not using this platform for tutoring. Mhm. So I is back again on this platform recently, and I had a onboarding I had done the onboarding course previously. तो वो दोबारा मेरी dashboard पे show हो रहा है कि you have already done it. Okay. I have the interview जिसका भी I didn't receive any review right Okay. now. मुझे mail नहीं आया. The question I wanted to ask is कि पहले भी मैंने register किया था, मैंने registration करवाई हुई थी
फी भी दी हुई थी, बट स्टिल द जो आप नई न्यू पॉलिसी है 5000 पर एनम फी वाली, एंड स्टिल आई एम नॉट एलिजिबल टू सेंड एनी ऑफर, मे बी बिकॉज एक तो मुझे शायद मेल नहीं आया अभी तक, एंड सेकेंडली मेरी ये जो प्रैक्टिस क्लास वाला पोर्शन है वो अब न्यू फीचर है, शायद वो पेंडिंग है। तो माय क्वेश्चन इज कि इफ आई वांट टू अगेन परसू ऑन दिस प्लेटफॉर्म, तो क्या मुझे वो 5000 वाला रजिस्ट्रेशन पार्ट दोबारा से उससे गो थ्रू होना पड़ेगा? Okay, very good question and a very frequently asked question also. Let me see, इसको हमने कहीं पे explain किया था, FAQs के अंदर हमने डाल दिया था. Just give me a second. So part of your question was कि अगर मैंने पहले काम किया हुआ है, now I'm resuming, तो how do I resume? So certainly sometimes ऐसा होता है कि अगर हमारी कोई पॉलिसी ऐसी चेंज हुई है, तो we do require teachers on the platform to take a look at certain sections of the onboarding course or the new policy. Communication जाती है active teachers को भी, एक तो ये बात है. The second thing is कि जो ये annual fee है to work with students to be able to send out offers, इसका रैशनल क्या है? इसका रैशनल ये है कि every time you give a demo to some potential student, our team has to go and actually review that demo class कि what happened in this class. और साल में जितने डेमोज आप देते हैं वो each one of those is reviewed by our team, and that's a quality assurance check that we have, and that is the reason why the platform has mashallah grown. So ये आपकी जो 5000 वाली फ्लैट फी होती है ना, this covers all of your offers that are going out, all the support that you're getting from the platform. आपकी मार्केटिंग प्लेटफॉर्म कर रहा होता है आपके बिहाफ के ऊपर, आपकी वीडियो स्निपेट्स आपकी परमिशन लेके हम पब्लिश कर रहे होते हैं यूट्यूब के ऊपर, आपके पब्लिक प्रोफाइल्स, आपकी रेटिंग सब मेंटेन हो रहा होता है, राइट? सो इट्स अ वेरी नॉमिनल अमाउंट दैट वे टू कवर एवरीथिंग दैट इज बीइंग डन फॉर यू टू गेट जॉब्स एज अ ट्यूटर. अच्छा, एंड दैट इज द रीजन कि ये रिकरिंग भी है, क्योंकि ये काम ऑपरेशनल है, नेचर ट्रांजैक्शनल है, ये बार बार होंगे और हर टीचर के लिए होंगे और हर डेमो क्लास के लिए होंगे. तो वो 5000 फी का रैशनल जो ये वी हैड पुट इट समवेयर ऑन द प्लेटफॉर्म बिकॉज इट्स अ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, इसकी पूरी रैशनल पूरी जो है वो हमारी हेल्प डॉक्यूमेंट में पड़ी हुई है. अच्छा, इज देयर एनी पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन दैट इज नॉट एड्रेस्ड? Yes, there is. So my point is कि अभी जो पार्ट मेरा रहता है, लाइक ऑनबोर्डिंग तो ऑलरेडी हुई भी है, आईडी भी है, प्रोफाइल भी है, मैंने इधर पे डेमोज भी एक आध लिया हुआ है ऑलरेडी बिफोर, बट नाउ जो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है कि आई एम अनएबल टू सेंड एनी ऑफर फॉर लाइक ट्यूशन टू द स्टूडेंट. तो माय क्वेश्चन टू यू इज कि क्या ये जो प्रैक्टिस क्लास वाला पॉइंट मेरी प्रोफाइल पर मिसिंग आ रहा है, आफ्टर दैट इफ आई एम गोइंग टू फुलफिल दिस पार्ट, तो क्या मैं ऑफर सेंड कर पाऊंगी या मुझे पहले ये फी वाला पार्ट फुलफिल करना पड़ेगा, देन आई एम गोइंग टू बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द ट्यूशंस? So what I suggest is कि देखिए आपका केस बड़ा स्पेसिफिक है, इट इज नॉट वेरी वाइज के हम इसको यहाँ डिस्कस करें. यू कैन प्रोबेबली टेक अ स्नैपशॉट ऑफ योर डैशबोर्ड, सेंड इट टू द एडमिन, और वो आपके केस की जो भी हिस्ट्री है, कॉन्टेक्स्ट है, उसके मुताबिक आपको गाइड कर देंगे कि आपको जो भी हर्डल्स आ रहे हैं उसका एग्जैक्टली आपने 1 2 3 एक्शंस क्या करने हैं. Actually, I have sent it to admin. I think I have WhatsApp it to Bilal, but I think उन्होंने अभी तक मेरा मैसेज देखा नहीं है, तो that's why नहीं I नहीं have. नहीं, so Bilal is actually, Bilal जो है, he is one of our moderators, he is part of our group. Asya and Bilal, we do the skill exchange session, but admin@tutorbees.net is the email that you should use. Multiple people are part of the admin team, और वो within 24 working hours जो होते हैं, they respond to every incoming request. ठीक है, तो आपने जब भी सवाल पूछना है प्लीज आप admin@tutorbees.net पे लिखिए, अपनी डिटेल के साथ लिखें, मे बी स्नैपशॉट ऑफ योर डैशबोर्ड कि जी दिस इज व्हाट आई एम सीइंग, व्हाट इज द गैप. लॉट ऑफ टाइम्स इंफॉर्मेशन डैशबोर्ड पे अवेलेबल होती है,
ट्यूटर्स क्लिक करके देखते नहीं है, जहाँ पे वो आपकी प्रोफाइल कंप्लीशन आ रही है, इफ यू क्लिक इट, उस पे नीचे डिटेल में लिखा होगा. बट एनीवेज, यू प्लीज सेंड आउट एन ईमेल टू एडमिन. विद इन 24 आवर्स आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, 1 वर्किंग डे. कल छुट्टी है, कल नहीं मिलेगा, उससे नेक्स्ट वर्किंग डे पे मिलेगा. All ऑलराइट. right. Oh, yes. जी, Thank you. थैंक यू जी. अच्छा, so what happens after you complete class? Then the onus is on us to actually review each person's practice class. You can imagine that the time that we invest in reviewing the tutors who are applying. Each single person gets that same attention के उनकी practice class में से our people go and check के have they been able to share their screen, इनको trouble तो नहीं हुआ, did they upload a file on the whiteboard, mic के साथ comfortable हैं, are they able to write on the whiteboard, कुछ चीजें use कर सकते हैं, ठीक है, कैमरा के साथ comfortable हैं, and so on. So I think it's very important for everyone to acknowledge that this effort is done for each and every single person who is trying to work on the platform as a tutor. And then of course the introduction part and the teaching part gets up. आपने अगर लिखा है that you kind of maybe English is a good example to talk about. If a teacher has written that they teach English, it is best that they record their introduction in English. इट्स अ वेरी कॉमन मिस्टेक जो हमने देखी है कि वो लिखते तो हैं कि जी अच्छा मैंने इंग्लिश पढ़ानी है या ऑल सब्जेक्ट्स पढ़ाने हैं या व्हाटएवर, लेकिन वो अपना इंट्रोडक्शन उर्दू में कराते हैं, तो वो लॉजिकली इतना टाई नहीं करता. पेरेंट्स व्हेन दे कंपेयर दीज वीडियोस, then they want to actually see the teachers who are speaking English very well also. Keep that in mind. अच्छा, सो जब ये हमारा रिव्यू हो जाता है तो admin@tutorbees.net यहीं से आपको वापस ईमेल जारी होती है या मॉडरेटर अकाउंट से जारी होती है टू टेल यू कि जी क्या शॉर्टकमिंग थी. एक सेकंड कीजिएगा जी. सो आई थिंक दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द कंटेंट दैट आई हैड. अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो प्लीज गो अहेड, द फ्लोर इज ओपन फॉर ऑल क्वेश्चंस, कमेंट्स. किसी का कोई सवाल आप पूछ सकते हैं जी. Maybe Bilal can actually demonstrate how can you review the platform. Yes, ma'am. Can you hear me, please? Yes, yes. And while he's doing it, there's one more note that I want to add here. अगर आप लोगों को लगता है कि आज का सेशन यूजफुल है, अगर आप चाहते हैं कि we should do another session also, you can come back with your questions. We intend to repeat this session inshallah next month also. Sorry, I have a question. जी बताइए. वो क्वेश्चन ये है कि अभी हमने जो प्रैक्टिस क्लास हमने व्हाइट बोर्ड यूज करना होगा. Right after that, we need to record 1 minute introduction as well, and then 5 minutes. जी जी. So let me go back to the checklist. So यानी टाइम की कंस्ट्रेंट नहीं है जी, आप यू कैन टेक योर टाइम, लेकिन जो मैंने यहाँ पे चेकलिस्ट की थी, फिलहाल आई एम गोइंग टू टेक द प्रेजेंटर फॉर अ फ्यू मिनट्स. Sure, ma'am. Sure. Hamid, I request you to please be a little far from your microphone. Oh, sorry. अच्छा जी. Thank you. तो ये वाला जो स्क्रीन है ना जी, इसके ऊपर सारी चीजें बताई हुई हैं कि प्रैक्टिस क्लास में सबसे पहले तो आपने टेक्नोलॉजी का यूज जो है ना वो आपने एक्सप्लेन करना है. सॉरी, जस्ट 1 सेकेंड. बिलाल, कैन यू एक्सप्लेन दिस? Yes, ma'am. So, okay. So, about the introduction, it's very simple. As you can see, you will need to turn on the camera. Without turning on the camera, the introduction will be cancelled. Okay. So, make sure that you turn on your camera and record your introduction. Right. So, the second point is obvious. Make sure to dress up professionally for recording the introduction. Furthermore, you can see in the on the YouTube channel. Let me take the presentation if I can. So you can see on the YouTube channel, we are uploading your introductions, and we are pasting on your profiles, right? So
just make sure that you have to dress professionally and turn on your camera first. So these are the first two things. Then within a minute duration, you need to greet in a positive smile, introduce yourself and explain what can you teach the best and to which grades and ages. अपना experience भी बता सकते हैं इसमें, right? आपने कहाँ पढ़ाया है, right? और अपने subjects के बारे में. So it takes hardly a minute or hardly like 40 to 50 seconds, right? So yeah, so let me just share my screen. Let me show you that. Okay, I think my screen is visible now. Okay, so as you can see here, these are the I'm going. This is the TutorBees channel, and these are the playlists, right? So I'm going to click playlists. Now all the playlists are shown here. You can see. So you will go to our tutors, right? So just let's find the. Let me just check. There is a playlist of our tutors here, and we will this one, right? This one. So I'm going to click it. So all of the tutors who have the introduction. So this is how you can see all of the introductions of the tutors. There are many tutors here. अच्छा बिलाल, so I do have a question on the chat के white board की usage जो है ना वो उनको clear नहीं समझ आया. So how to use the white board वाली video अगर आप दिखा सकें. So Okay, essentially ma'am. जी जिस तरह से हाँ हमने यहाँ पे एक PDF अपलोड की हुई है, हम उस पे लिख रहे हैं और आप भी एक्चुअली उस पे लिख सकते हैं. मैंने फॉर एग्जांपल लेट मी बिलाल ये अगर आप इनको राइटिंग टूल्स दें तो ट्यूटर्स भी लिख सकेंगे. Yes, ma'am. Just give me a moment. या तो देखिए अब बिलाल ने व्हाइट बोर्ड शेयर किया ना, आप सारे लोग इस पे लिख सकते हैं. तो आपकी प्रैक्टिस क्लास में क्योंकि यू विल बी द ओनली पर्सन इन द क्लास, तो आप अकेले लिख रहे होंगे, राइट? बट जब आपके स्टूडेंट के साथ रियल डेमो क्लास हो रही होगी, आप कोई चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं, कोई डायग्राम बना हुआ है, उसके ऊपर आप एक्चुअली लिख के उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यू नो दिस इज द पार्ट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. आपको ये बात क्लियर हो गई है? मोहम्मद एस, आई एम सॉरी आई कैन नॉट सी योर नेम, मुझे मोहम्मद एस ही नजर आ रहा है नेम में. Whiteboard. चलिए, एक्सीलेंट हो गया. सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर नाउ. लेट्स कंटिन्यू. बिलाल, जो भी आप डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे रिव्यूज का, हम बता सकते हैं. Yes, ma'am. Just give me a moment. So about the reviews. Okay, just give me a moment now. So I'm going to share my screen. So in the end of the session, I would like all of you to give us review on trustpilot.com. So I'm going to write trustpilot.com. So here you will search TutorBees.net, right? So this is our profile on trustpilot.com. So please, after the session, write your review, your feedback here by clicking this button. And first of all, give us stars and share your experience with us, right? Give a title. For example, and the date is today of the experience, and give the title here. For example, and then you will need to submit your review by logging into your account. So I will just continue with Google, right? And yeah. So now my review will be submitted on Trustpilot, right? So please, I request all of you
to give review after the session. Ma'am, thank you. Thank you very much, Bilal. I'm So, writing down Alhamdulillah. this. Ma'am, I'm sorry. जी I'm just I'm just writing trustpilot.com in the public chat so people जी can. जी जी please do. Yes. So yes, ma'am, please. नहीं, I was saying कि मैं एक्चुअली हाउ टू यूज द व्हाइट बोर्ड वाली वीडियो का लिंक जो है ना वो अभी चैट में somebody is asked for it. वो अगर हम अभी इनको दे दें तो अच्छा हो जाएगा. Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैं दे रहा हूँ. How to use the whiteboard link. जी, if someone wants to ask any question, please let us know. अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी मैम, वालेकुम मैं अस्सलाम. असल में तो उर्दू स्पीच हूँ और पर्सनल भी मैं पढ़ाता रहा हूँ, इंग्लिश स्पीच वालों, अरबिक वालों को कुरान करीम पढ़ाता हूँ। कुरान करीम पढ़ाना तो बहुत आसान है, वो तो अरबी में ही पढ़ाना है। तो अगर कोई इंग्लिश स्टूडेंट आ जाता है तो उसको भी पढ़ा सकते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि हमारे पास जो मवाद होता है ऐप की सूरत में कुरान करीम है या ऐप की सूरत में हमारे पास नूरानी कायदा है, नमाज वगैरह है, तो वो हम इस पर शेयर कर सकते हैं, शेयर करके वहाँ से पढ़ाया जा सके तो। जी बिल्कुल, आप अपनी स्क्रीन शेयर के ऊपर वो जो आपने जो भी सूरत की तिलावत करनी है उसको आप अपने किसी ब्राउज़र में किसी पीडीएफ के अंदर आप ओपन कीजिए और स्क्रीन शेयर के ऊपर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल। जी ठीक है। तो ये जो इंटरव्यू का प्रोसेस होता है वो हमारे हमारे पास ईमेल आएगा कि आपने इंटरव्यू करा दे या कुछ? हाँ, देखिए हमारी सारी जो ट्यूटर की ऑनबोर्डिंग प्रोसेस है ऑल ऑफ इट इज़ ऑनलाइन। सो जब आपकी और ये सारे स्टेप सीक्वेंस के अंदर चलते हैं। आप एक स्टेप मुकम्मल करेंगे, अगला स्टेप आ जाएगा। वो मुकम्मल करेंगे, अगला स्टेप आ जाएगा। हैं छोटे-छोटे। तो अगर मैं ये प्रेज़ेंटेशन आप वापस अगर फ़िलहाल दे दें जस्ट 1 सेकंड या तो ये जिस तरह मैंने आपको ये वाला था ना? जी, तो जब आप प्रोफ़ाइल करें तब आपको इंटरव्यू की ऑप्शन नज़र नहीं आएगी। ऑनबोर्डिंग कोर्स करें तब भी नज़र नहीं आएगी। नंबर 3 पे असेसमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पे सिर्फ़ असेसमेंट आपने करनी है, ठीक है? लेकिन जिस वक़्त आप इस जी स्टेज पर आ जाते हैं कि अच्छा आपके ये वाले सारे स्टेप्स फॉर एग्ज़ाम्पल 1 टू 5 सब मुकम्मल हो गए हैं। आईडी भी वेरीफ़ाई हो गया है। लास्ट स्टेज के ऊपर यू विल सी एन ऑप्शन जिसमें कैलेंडर बना होता है और आप अपनी मर्ज़ी का डेट, टाइम जो भी उसमें स्लॉट्स अवेलेबल हैं वो खुद चूज़ कर सकते हैं, ठीक है? जी ठीक है। तो उसी एग्ज़ैक्ट डेट टाइम के ऊपर आपकी इंटरव्यू की क्लास जो है प्लेटफ़ॉर्म पे बनी होगी। आपने जॉइन क्लास का बटन जैसे आज क्लिक किया है, वैसे ही आप जॉइन क्लास जी करेंगे तो दैट्स योर इंटरव्यू। जी थैंक यू। एनीबॉडी एल्स वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन? किसी का सवाल है प्लीज़ पूछ लीजिए। मैम, मैंने ये लिंक शेयर कर दिया व्हाइट बोर्ड के लिए. ओके, सो ये तो जिसको चाहिए मैम, था बिलाल ने पब्लिक चैट के ऊपर डाल दिया जी यूट्यूब का लिंक। I should share it in the group as well, right? जी प्लीज़, यस। So I'm sharing it in the WhatsApp group, so you can check this out later on as well. All right, so I want to thank everyone who has joined. Very grateful जी। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो you can always send an email to admin@tutorbees.net. You can ask for another skill exchange session as well. We're happy to do this again on any specific points that we see. We have the WhatsApp group जो कि सारे टीचर्स जो हैं उसको ज्वाइन कर सकते हैं। That's also an option. With that, I'd like to Thank you so just much, ma'am. say goodbye. Thank you so much, Thank ma'am. you very much, Bilal. Allah Hafiz. Allah Hafiz.